Good morning, my children. I welcome to all of you, my Pathshala. Today, I am going to repeat the same poem, All Things Bright and Beautiful. After it, I will discuss all the questions bit by bit, one by one. तुमने सब जानिथिबो समग्र विश्व जेते कोविड-19 द्वारा आतंकित समस्त लोक माने जेते भयभीत सेते बेले मोर प्रयास केवल तुम मान ए कोरोना भाइरस आसी निजे केवल आमको मारिया पाई आमको आउ थे सुस्थ सबल हो गोटे नूतन मार्ग नूतन धारे जीवाई से किसी शिक्षा दे जीव आम समस्ते घरे रहिबा सुरक्षित भाव रहिबा सरकारंकर निर्देश को जदि आम न मानिबा जहाटा असुविधा हेबो जो परिणामटा आम भोगिबा आम पाई अन्य कई भोगिबे नहीं। तेणु मु समस्त को रिक्वेस्ट करी पिला माने आम सबुबले प्रस्तुत होगा घर भितर घर बाहर नुहे पिला मानक सहित मिसिबा नहीं आम किछि दिन पई जेते दिन पर्यंत ए लॉकडाउन सिस्टम रू आमे मुक्त है नांती मोरे छोटिया प्रयास तुम मानक पई तुम्हें माने जदि पढ़िबो ताले मु तुमको पढ़ेबी मैं एक प्रॉमिस करिछि जेते दिन पर्यंत मु बंचिछि सेते दिन पर्यंत ए प्रयास जारी रहिबो निश्चय। कारण मु जने शिक्षक शिक्षा दान करिबा होउछि मोर धर्म। जेते मु शिक्षा बांटीबी जेते विद्या बांटीबी ए विद्या बढ़िबो निश्चय। मु जदिओ बड़ पंडित बड़ ज्ञानी हबाकू प्रयास करूनी किंतु किछि किछि जानिबी एइरा होउछि मोर प्रयास। तेणु मु जानिबा संगे संगे तुममानकू जनइबी सेतिपई तो कुहाइछि विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन। बहुत बढ़िया कथाटा सब रखिबो पिला माने। तुम्हें जानिछ हार्ड लेबर सबुठारु गोटे भल अस्त्र तुम्हें पृथ्वी को जय करने विद्या को पाठ को आयात करने। तेणु बिना परिश्रम पृथ्वीर कौन सी जिनिस आज पर्यंत संभव है नहीं। तुम्हें वैज्ञानिक कथा कह कौन सी भल शिक्षक कथा कह भल नेता कथा कह भल महापुरुषों कथा कह समस्ते निज निज साधन निज निज चेष्टा निज निज परिश्रम बल से माने आग को जाइछंती एवं उच्च पहाच को से माने जाई परछंती। आस आज हमें पढ़िबा सही पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल written by C.F. Alexander. Here is present my daughters Mamali. She is reading for you. I request to all of you, repeat the same text, repeat the same poem, repeat the same lessons again and again. You know, practice makes a man perfect. जे परफेक्ट है से बिना प्रैक्टिस रे होना यहाँ तुमको मन रखा पड़ो। प्रथमे आशा में देखा ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल C.F. Alexander केमिति आम लिखिं। मुझे निश्चित सबू स्टैंडर्ड पिला को पढ़ेबी। कारण जो मैंने हायर स्टैंडर्ड अच्छा से इंग्लिश टू इंग्लिश कहले बुझे। आम मध्य ओडिशा रे बहुत पिला अच्छा जो मैंने 10वीं श्रेणी पढ़ुं। मु क्या आख्या करी कहूनी एटा वास्तव कथा। A to Z पर्यंत लिखिपार ना विशेषकर आम अंचल सुंदरगढ़ जिला
एमती कोस्टाल एरिया नहांती बोली कहि परिबिनी अछंती सेमाने स्मॉल लेटर कौन कैपिटल लेटर भितर डिफरेंस से आज पर्यंत भी जानी नांती बहुत पिला से पिला को मु आदर करी नउची आस आमे पढ़िबा एवं मु तुमको पढ़ेबी इजी वे रे जेमिति आमे पढ़िबा तुमको किसी पैसा देवा पड़ो नहीं कारण मु बंचीला पर्यंत काठर पैसा नेबी नहीं यहाँ भाभी नियो यही जो प्रोग्रामटा होची कार्यक्रम होची ये कार्यक्रम द्वारा मु कहा ठारू एक पैसा मागिबी नहीं काना भगवान मते हाथ गोड़ देइचंती खाइबा पई खटिबा पई हाथ गोड़ देइचंती मु खाइ खटिबी खाइबी एवं मरिबा पूर्वरु किछि भल कथा भल काम करिकि जीवी एइटा होची मोर संकल्प इट इज माय प्रॉमिस लेट्स सी लेट्स एंजॉय लेट्स रिसाइट लेट्स रीड द मोस्ट famous poem written by C.F. Alexander, All Things Bright and Beautiful. Let us see. Topic: All Things Bright and Beautiful. Poet C.F. Alexander. Stanza 1. Stanza 1. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Again, repeat. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. My children, you see, there are 4 lines. 4 lines make the first stanza. आमे ओडियार जानछंती केतेटा धाड़ी को नेकी गोटे पद हुए जेमिति आहे दयामय विश्व बिहारी घेन दया बही मोर गुहारी एटा ओडिया व्याकरण रे बा ओडिया ग्रामर तुमे माने पढ़ी दिबो जेमिति दीटा धाड़ी को नेकी गोटे पद हला सेमिति एठी चारोटी धाड़ी को नेकी गोटे पद होईची दिस स्टांजा कंटेन्स 4 लाइन्स फर्स्ट लाइन इज ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल second line is all creatures great and small third line is all things wise and wonderful fourth line is the Lord God made them all. Thank you. Let us go to the second stanza. Read it. Each little flowers that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their teeny wings. Each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their teeny wings. Then The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, the brightness of the sky. the purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning, that brightens of the sky. Then fourth stanza. Cold winter in the wind. Say stanza number 4. Stanza number 4. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. The cold wind in the winters, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. The cold wind in the winters, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them everyone. Stanza number? Stanza number 5. The tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the water, we gather every day. The tall trees in the green wood, the meadows where we play, the rushes by the waters, we gather every day. Then it is the last stanza and 6th number. He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well.
He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. Let us discuss one by one. What? Other part. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. Let us discuss stanza number 1. ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅନଲାଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଆକୁରେଟ୍। এটা ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦରକାର। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ସୁଟିଂ କରିବା, ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା, ତାହେଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆଉ ଅଡ଼ିଓ ଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଆସିବ। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣେ ନା ମୋର ଅଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ମୋର ଭିଜୁଆଲ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ, କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ତଥାପି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଫଳ ପାଇବ। In the first stanza we see some objects, things bright and beautiful, all things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. There are some questions arise in our mind. Who made all these things? किए ए जिनस गुड़ा सब सृष्टि कला? जो जिनस गुड़ा आम चतुर्पार्श्व देखुंती, those things we see around us, who made? किए सृष्टि कला, किए तैयारी कला? ये प्रश्न आसवा आम मन रे स्वाभाविक, कारण आमे समस्ते मानव बा ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। Some important words in this stanza: bright, beautiful, great, small, Lord God, and similar words. Storage. Problem root with it. We see variety things around us. We also see small creatures, all things like rivers. I can see here from my roof the river Brahmani. तो मैंने जानी थी वो ब्राह्मणी, कोयल, शंख, ये तीनोटी नदीर संगम स्थल। जॉइनिंग पॉइंट हूँ राउरकेलार वेदव्यास। वेदव्यास हूँ गोटे प्रसिद्ध स्थान, कल्चरल पॉइंट। मुझे देखिपारुची ब्राह्मणी नदी। मुझे प्रश्न करे ब्राह्मणी नदी को किए तैयारी कला, तुम्हें निश्चित खोजिब किसी समय तुम मनरे हो बा क्या पचारि भी हो किए तैयारी कला। आमे जहाँटा ये देखुंती सबू से जड़े तैयारी करिछि, से होउचंती गॉड बा ईश्वर बा सर्वशक्तिमान कर्ता, जे आमको तैयारी करचंती एवं ए जिनस गुड़ा सब तैयारी करचंती। तबरे in second stanza, each little flower that opens, each little bird that sings, he made their glowing colors, he made their tiny wings. The objects we see: little flowers, little bird, glowing colors, teeny wings. And in the third stanza we see some vocabulary, some words. The purple headed mountain. Mountain, there is an object. The river running by, you see the rivers
and the sunset and the morning. From day to evening, we enjoy the beautiful scenery at the sunset and the sunrise. In the morning, we see the beautiful scenery of sunrise. We know sun rises in the east and sun sets in the west. We enjoy the beautiful morning and beautiful evening with the sky, with the river, with the hills, with the objects, with the tall trees, the purple-headed mountains, and the teeny birds, the small flowers, etc. Stanza 3 gula. Stanza 4. The cold wind in the winters, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the gardens, he made them everyone's. Ripe fruits, we like fruits to eat. ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବ ସମୟ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ ଏସବୁ they all are fruits. Coconut, mangoes, guava, grapes, apple, they are fruits. And the flowers, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ଏକ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଏବଂ ଆମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଲମୋହର, लिली, चंपा, rose flowers, etc. The tall trees in the green woods, the meadows where we play, the rushes by the waters we gather every day. मुझे प्रश्न करे where do you play, तुम्हें कौन खेल, तुम निश्चित आंसर दब we play in the playground. We play playgrounds, the games like cricket, footballs, kabaddi, kho-kho, these games. Meadow, that is a word in 5th stanza